Hello and welcome back to another video. So this video is about my journey of India to Poland. So as you guys know from the previous two vlogs that I was on a trip with my parents for 10 days. And before that, so as you guys know that I'm a computer engineering student from Rajkot. By the way, Rajkot is not my hometown but मेरी college वहाँ पे है. तो वहाँ पे engineering के 3 semesters मैंने ख़त्म कर लिए. And luckily, I got a chance to participate in an exchange program where I'm supposed to study next 1 year, 2 semesters over here in Poland. तो इंडिया में मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था एंड वीज़ा भी मैंने अप्लाई कर दिया था. अब एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था विथ पेरेंट्स एंड टीवी पे न्यूज़ चल रही थी अबाउट पीएम मोदी इनॉग्रेटिंग ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इसका रूट था दिल्ली टू वैष्णो देवी माता के मंदिर कटरा. तो वो न्यूज़ देखते देखते बातें कर रहे थे एंड अचानक से डिसाइड किया कि हम जाएंगे इस ट्रेन में वैष्णो देवी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए. तो फिर सोचा कि चलो अब कुछ और डेस्टिनेशंस भी ऐड की जाए. तो सब फाइनल किया और मैंने फटाफट से चालू की बुकिंग्स एंड हम निकलने वाले थे 2 दिन बाद तीसरे दिन पे. तो मैंने सोचा कि चलो अब इसी ट्रिप से मैं अपने व्लॉग्स चालू करूँगा. ऑल्दो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स के साथ काफ़ी टाइम बाद मेरी ट्रिप थी. So I decided to spend the complete time with them. अब बात है इस बात पे कि ये मेरी लाइफ का सबसे एक्सटेंसिव ट्रैवल क्यों था.